Our next question is question number 6, and question number 6 is cos inverse 12 by 13 plus sin inverse 3 by 5 is equal to sin inverse 56 by 65. ये हमें प्रूव करना है। हम इसके LHS को सिंप्लीफाई करेंगे और RHS के इक्वल इसको प्रूव करेंगे, राइट। सो LHS में सबसे पहले हम cos इनवर्स 12 by 13 को ए एज्यूम कर लेते हैं एंड sin इनवर्स 3 by 5 को हम बी एज्यूम कर लेते हैं। cos inverse 12 by 13 is equal to A. This implies 12 by 13 is equal to cos A. cos A की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। नाउ हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। Suppose this is angle A of the triangle. So cos A की वैल्यू 12 by 13 है, तो 12 क्या हुआ हमारा बेस एंड 13 क्या होगा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसमें परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं विच विल बी 5। नाउ वी विल फाइंड साइन ऑफ ए एंड व्हाट इज साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5 अपॉन 13, राइट। साइन ए की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। सेकंड, अब हम साइन इनवर्स 3 by 5 को क्या अज्यूम करते हैं बी। लेट साइन इनवर्स 3 by 5 is equal to b. This implies 3 by 5 is equal to sine of b. यहाँ से हमें साइन b की वैल्यू मिली है। अगेन हम ट्राइंगल बनाएंगे। सपोज दिस इज एंगल b, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, so base will be 4 according to Pythagoras. Okay, so from this we will find cos of b, and cos b will be 4 upon 5, right. Now we will apply left प्रूविंग पार्ट के LHS को देखिए। इसको हमने a एज्यूम किया है, सेकेंड पार्ट को b एज्यूम किया है। सो ये हमारे पास क्या हो गया लाइक a प्लस बी। और आपको यहाँ पर देखना है इनवर्स में क्या टर्म है। प्रूविंग पार्ट में साइन इनवर्स है, सो यहाँ पर आप साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करेंगे। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। साइन a प्लस बी इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है। जो वैल्यूज हमारे पास है वो सब हम इसमें पुट कर देंगे। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज साइन a। साइन इज 3 by 5 by 5 by 13, cos b is 4 by 5 plus cos a is 12 by 13 sin b is 5 by 13. So sin of a plus b is equal to 20 by 65 plus let me correct something here. This 5 by 13, in place of sin b we need to put sin b is 3 by 5, so we will write here 3 by 5. So this is
36 by 65. So finally sine of a plus b is 65, 20 plus 36. So sine of a plus b, which is equal to, this is 20 plus 36, that is 56. 56 upon 65, right? So a plus b is equal to what? Sine inverse of 56 by 65. Now what is a? Initially a हमने किसको assume किया था? Cos inverse 12 by 13. Cos inverse 12 by 13 plus b हमने किसको assume किया है? b हमने assume किया है sin inverse 3 by 5 को. So sin inverse 3 by 5 in place of b, which is equal to, right side पहले से ही हमारे पास क्या है? Sin inverse of 56 upon 65. फाइन, यही हमें प्रूव करना था. So let us see next question. Next question is question number 7. Question number 7 is also of the similar kind and you will try it. So let us do 8th question. Tangent inverse 1 by 5 plus tangent inverse 1 by 7 plus tangent inverse 1 by 3 plus tangent inverse 1 by 8 is equal to 5 by 4. हमें प्रूव करना है इसको. LHS को सिंप्लीफाई करेंगे हम, RHS के इक्वल प्रूव करेंगे, जो यूजुअली हम करते हैं. टेकिंग LHS, and our LHS is like this, which is equal to, बिगनिंग की टू टर्म्स पे हम टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एंड फॉर टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1. वो भी हम देख सकते हैं. x इंटू वाई, x इज 1 by 5 and y is 1 by 7, which is product of these two is less than 1. So it will be tangent inverse of 1 by 5 plus 1 by 7 plus tangent inverse of 1 by 3 plus 1 by, this is tangent inverse of 1 by 5 plus 1 by 7 upon 1 minus 1 by 5 into 1 by 7 plus tangent inverse of, सेम आइडेंटिटी हम सेकेंड टर्म पे अप्लाई करेंगे, 1 upon 3 plus 1 upon 8 upon 1 minus 1 upon 3 into 1 by 8, right? Which is further equal to tangent inverse of, now let us simplify it, 35 7 plus 5 upon, this is 35, so taking LCM, this 35 minus 1 upon 35, right? Plus applying same identity, the second term is LCM is 24, so it will be 8 plus 3 upon LCM multiplication of these two, that is 24, so 24 minus 1 upon 24, right? Which is now tangent inverse, LCM cancel out in both terms, so it is 12 upon 34 plus tangent inverse of 11 upon 23, right? Which is equal to tangent inverse of
इसको आप कट कर सकते हैं। So it is 6 upon 17 plus 11 upon 23 upon 1 minus 6 upon 17 plus 11 into 11 upon 23, right, which is equal to tangent inverse of LCM। हम एक LCM न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, which is equal to tangent inverse of this is 325 upon this minus this is also 325, which is equal to tangent inverse of 1, right? And you know what is tangent inverse 1? Tangent inverse 1 is pi by 4, which is equal to our RHS। यही हमें प्रूव करना था। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। Our next question is question number 9, and question number 9 is tangent inverse root x is equal to half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x and x belongs to 0 to 1। ये हमें प्रूव करना है, राइट। सो इसमें हम RHS को लेके चलते हैं, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको LHS के इक्वल प्रूव करेंगे। सो RHS is half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ cos inverse 1 minus root x square upon 1 plus root x square, right? So let us assume that let root x is equal to tan theta। root x हमारा क्या है? tan theta। So this is equal to half of cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, which is equal to half of cos inverse, now 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is cos of 2 theta, right? Both cos and cos inverse will cancel each other, so it is cos inverse of both cos and cos inverse will cancel each other, so it is half of 2 theta, right? 2 will cancel out, this is theta। Now we will find out theta। So हमने रूट एक्स को tan थीटा पुट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट एक्स। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट एक्स, विच इज इक्वल टू आवर LHS। हमने RHS को सिंप्लीफाई किया है और उसको किसके इक्वल शो कर दिया? LHS के इक्वल।